So this question is very important towards any competitive exams. Okay. So now the question is, the force F is given by F is equal to 80 plus bt square, where t is the time. What are the dimensions of A and B? We have to calculate A and B to unknown constant. We have to find it. Okay. And the first option is given here, second option is given, third option, and the fourth option. Which one is correct option? We have to find it. Okay. Now this equation is given, F is equal to AT plus B t square. This is the equation is given. But in case of, we know that dimension of force, the dimension of force F, dimension of force is no mass into acceleration, that is m1 l1 t to the power minus 2. Okay, that is force is equal to mass into acceleration using this formula. Okay, and dimension of time, dimension of time, that is t, dimension of time is capital T. So here F means what? F means force. F means force and T means what? Time. T means time. Okay. But in case of here, the term AT, the term AT, the first term is AT. Okay. Must have the same dimension. Must have the same dimension as force. Okay. So that means as force, that means AT, dimension of AT is equal to dimension of force. Dimension of A is equal to dimension of force by dimension of T. So that is dimension of A is equal to dimension of force is nothing but m1 l1 t to the power minus 2. Dimension of time is t. So what shall we get? m1 l1 t to the power minus 3. So therefore we dimension of A is equal to m1 l1 t to the power minus 3. Okay. So which one is correct? So first m1 l1 t to the power minus 3 here and t to the power minus 3. Option, either option A or option B is correct. We have to find it which one is the correct answer, option A or option B. And C and D are cancelled. No minus. Here first term is t to the power minus 1, not 3 term, and this one is minus 4. Okay, this is wrong. So option A and option B are correct. Option A, either option B is correct. Any one option, any one of the option is correct. Okay. Next we have to find the second B term. Similarly, the term bt square, the term bt square. Okay. Must have same dimensions as force F. Okay. So the term bt square is the same dimension of force. So that is B, dimension of B and dimension of t square is equal to dimension of force. Dimension of B is equal to dimension of force divided by t square. Also written as dimension of force t of to the power 2. Dimension of B, you know, dimension of force m1 l1 t to the power minus 2 and time is t2. Dimension of V is equal to here m1
L1 t to the power minus 4. Okay. So in case of option A, which one is correct option? And m1 L1 t to the power minus 4. So here m1 L1 t to the power, that means option B is your correct answer. Okay. पिला मैंने देखी पार्छ ये जो क्वेश्चन मु सॉल्व कर देछि देख ये क्वेश्चन हो वेरी इंपोर्टेंट टुवर्ड्स योर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई ओके जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दियो ना कहीं दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तेणु ये क्वेश्चन को आम केमी सॉल्व करवा तो मु स्टेप बाय स्टेप तो कही सारी आउ थे मुझे कहीदे देख समस्त सब मन रखि पे क्वेश्चन को जब भलसे न पढ़ुच ताले आंसर करवा तुम डिफिकल्ट हम ठीक अच्छे जेकोसी क्वेश्चन तुम्हें भलसे पढ़ भल भाव पढ़ला क्वेश्चन को सॉल्व कर ठीक अच्छे आउ ये क्वेश्चन जे तुम जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दियो ना कहीं आसूसी तो क्वेश्चन कौन अच्छे फास्ट पढ़ा ए फोर्स एफ तो एफ हूँ फोर्स इज गिवेन बाय एफ इज इक्वल 80 + bt स्क्वायर अच्छी तो फोर्स गोटे इक्वेशन ये गिवेन अच्छी फोर्स डिपेंड ऑन द टाइम एंड ए एंड बी आर टू कांस्टेंट ए और बी हूँ दुटा कांस्टेंट अच्छी पे से कौन टी हूँ टाइम देती व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी तेणु ए और बी जो अच्छी पे ए और बी हूँ डायमेंशन आम बाहर करवा तेणु ये देख ए ऑप्शन अच्छी बी ऑप्शन सी डी ऑप्शन तेणु चारिटा ऑप्शन अच्छी तेणु चार्टा ऑप्शन भितर को ऑप्शन करेक्ट हम आम बाछा तेणु ये मुझे फोर्स डायमेंशन लिखिली देख फोर्स डायमेंशन फर्मुला हूँ एम L1 t to the -2 कहीं आम फोर्स जान मास इंटू एक्सेलरेशन ओके तो डायमेंशन ऑफ टाइम जान तुम समस्त डायमेंशन टाइम ये लिखिले ये देख अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होमोजेनिटी कौन कौच जदि ए टी रहा फर्मुला बाहर यार जहाँ डायमेंशन बाहर यही दुटा टर्म को सेम डायमेंशन बाहर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होमोजेनिटी है ए टी रहा डायमेंशन हम bt स्क्वायर सेम डायमेंशन फर्मुला बाहर कहीं प्रिंसिपल होमोजेनिटी तो टर्म ए टी मस्ट हैव द सेम डायमेंशन तेणु जो टर्म देखुच पे ए टी तो डायमेंशनटा सब सामान आसो तेणु जहाँ मुझे लिखली ए टी इज इक्वल टू फोर्स डायमेंशन सहित मुझे लिखिदेली तेणु ए डायमेंशन आम बाहर कले फोर्स बाय टाइम डायमेंशन तेणु फोर्स डायमेंशन फर्मुला पुट टाइम डायमेंशन पुट कले तेणु ये आमर ए डायमेंशन फर्मुला है नेक्स्ट हूँ द टर्म bt स्क्वायर देख मुझे अलरेडी कही सारी होमोजेनिटी प्रिंसिपल अनुसार तेणु फोर्स जहाँ डायमेंशन हम एटी डायमेंशन सेम हम फोर्स जहाँ डायमेंशन हम bt स्क्वायर डायमेंशन सेम हम तेणु सेम अच्छी तेणु एमती लिखिली या लिखला बी डायमेंशन इज इक्वल टू फोर्स डायमेंशन टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर पावर 2 लिखिदेली फोर्स डायमेंशन फर्मुला टी डायमेंशन फर्मुला पुट कली तेणु कौन बी डायमेंशन ये बाहर ना देखो पे मैंने क्वेश्चन बहुत इजी अच्छी तुम्हें को आपको सॉल्व कलापर जापर बहुत इजी क्वेश्चन ओके पे गोटे छोटिया रिक्वेस्ट यदि भिडियो भल लगे लाइक कर शेयर कर आउ सब्सक्राइब कर जमार भूलना ना एमतीका भिडियो देखापी प्लेलिस्ट को जा बहुत सारा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देती तो तुम्हें मैंने प्रैक्टिस कले बहुत सारा जिन जापर ओके थैंक यू फॉर योर वाचिंग थैंक यू।